Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and revised your previous lessons. Today, we are going to start our chapter 12, which is beaks and claws. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of a chapter is Beaks and Claws, and the topics which we will discuss are types of beaks and types of claws. So, जो birds होती हैं, उनके पास teeth present नहीं होते. They have a beak to bite, crush, tear, or chew the food. जो birds होती हैं, they have different types of beaks depending upon the type of food they eat. Apart from feeding, जो beaks होती हैं, they have several other functions. Birds use करती हैं अपनी beaks को to hold objects, catching and killing prey, fighting with each other, searching for food, cleaning their feathers, protecting themselves, building their nest, and feeding their young ones. It is your activity which says visit your neighborhood areas and observe different birds on trees, in water, on the ground, and in the bushes. Now identify some common birds and observe the kind of food they eat. On the basis of your observations, complete the given table. आपको अपने नेबरहुड में जाना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स को फाइंड आउट करना है, वो क्या फूड खाती है, उसके बेसिस पे आपको ये टेबल आकर वापस फिल करना है. देन टाइप्स ऑफ बीक्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है क्रशिंग बीक. कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे स्पैरो, पिजन, क्रो एंड हेन, वो ग्रेन्स और सीड्स खाती हैं. दे हैव अ शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर क्रशिंग द ग्रेन्स. नाउ क्रैकिंग बीक होती है जैसे कुछ एनिमल बर्ड्स होती है जैसे पैरट जो फ्रूट और नट खाती हैं, उनकी कर्व्ड बीक होती है टू क्रैक हार्ड नट्स. डू यू नो द स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड बीक इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी. उसकी जो बीक होती है वो उसकी बॉडी से भी ज्यादा लॉन्ग होती है. टीयरिंग बीक कौन सी होती है? जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है जैसे आउल, ईगल, वल्चर, उनकी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके. शिसेलिंग बीक, ये जो होती है वुड पेकर, उनकी शार्प, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बीक होती है. वो क्या करती है? नेस्ट बनाती है बाय पैकिंग द वुड एंड मेकिंग होल्स इन द ट्री ट्रंक. इट ऑल्सो कैचेज इंसेक्ट प्रेजेंट इन द वुड विद इट्स बीक. नाउ शिफ्टिंग बीक कौन सी होती है? डक के पास फ्लैट ब्रॉड बीक होती है विद स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड्स, जो उसको मदद करती है टू पिक अप द फूड फ्रॉम वाटर. जो होल्स होते हैं वो बीक के वो शिफ्ट कर देते हैं मड और वाटर को, लीविंग द फूड बिहाइंड. Next is sticky beak. A swallow has a small and broad beak जो मदद करती है, जो sticky होती है अंदर से, and it helps the bird to catch and hold flies while flying. Do you know preening means to clean the feathers and set them right? The bird spread the wax secreted at the base of the feather during the process. Types of claws. जो feet होते हैं bird के, उनके पास claws होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं to climb, perch, find and hold food and swimming. जो birds होती हैं they have different type of claws depending upon their perching and feeding habits. जैसे perching birds होती हैं तो birds like sparrow and crow वो perch करती हैं on branch या फिर wire. Their feet have long thin claws with 3 toes in front and 1 at the back which help them to hold the branchy firmly. स्विमिंग बर्ड्स होती हैं बर्ड्स जो स्विम करती है पानी के अंदर जैसे डक, स्वान, पेंगुइन. दे हैव वेब्ड फीट. वो यूज करते हैं अपने वेब्ड फीट को ताकि वो फ्लैप कर सके टू स्विम. नाउ बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे बर्ड्स लाइक ईगल, आउल, हॉक एंड वल्चर, उनके पास शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं ताकि वो फर्मली प्रे को होल्ड कर सकें व्हाइल फ्लाइंग. डू यू नो फुली ग्रोन हार्पली ईगल्स प्रोसेस द लार्जेस्ट टैलून्स. It is your activity which says why are eagles and vultures called prey birds and how do the wings of a duck remain dry in water. So we will answer these. So here the answer for the first question can be why eagles and vultures called prey birds? Because they feed on other animals. How do wings of a duck remain dry in water? Because the duck has oil glands near their tails. Now, क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? कुछ बर्ड्स होती है जैसे पैरट, वुड पिकर, क्लाइंब करती हैं वो ट्रीज को. दे हैव 2 toes in front and 2 at the back which help them to cling onto the trees. स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं जो बर्ड्स जैसे hen scratch the ground to find seeds and insects in the soil.
They have strong claws with 3 toes in front and 1 at back. वेडिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? क्रेन, स्टॉर्क एंड हेरन, जिनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं विद स्प्रेड आउट टोज, जो उनकी मदद करती हैं टू वॉक इजीली इन शैलो वाटर विदाउट गेटिंग संक। देन रनिंग बर्ड्स आती हैं, जैसे फास्ट रनिंग बर्ड्स होती हैं ऑस्ट्रिच, जिनके पास 2 टोज होती है रेदर देन 4। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। It is your grocery where perching means sitting on a branch, wire, etc. Curve means to bend to make something bend and curve. Webbed means having piece of skin between the toes. Now, let's review the chapter. Birds do not have teeth. Parrot have a curved beak to crack hard nuts. Woodpecker has a sharp, strong and long beak. Running birds are very strong legs to run fast. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Duck and swan are dash birds, swimming. Hen is a dash bird. So the hen is a scratching bird. Eagle, owl and hawk etc. are called birds of prey. Sparrow and crow are perching. Now fill in the blank. Sparrow and hen have crushing beak. Woodpecker has chiseling beak. Duck has a shifting beak. And swallow has a small and broad beak. Next is true false. Parrot and woodpecker are climbing birds. True. Duck has a sharp, strong and long beak. False. Hen scratch the ground to find seed and insect in the soil. True. The tearing beak of an eagle catches insects present in the wood with its beak. False. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.